Assalamu alaikum everybody and welcome back to another episode of FWhy podcast. This is me, Frihal Taf, wishing everybody a great day and a great year. I'm here with, I would say, a guest who I haven't had in the profession that we usually know so much about. जब मुझे लोग मुझे देखते हैं और मुझे जानते हैं वो फैशन की वजह से ज़्यादा जानते हैं और as a previous model and my guest today is somebody who has in a very short time made her name in the fashion and modeling industry. So I would like to welcome the one and only supermodel Mushk Kaleem. Hi. Hi. क्या हाल है? I'm so excited to do this. Really? Yeah. मैं भी बहुत excited हूँ. ऑल्सो बिकॉज जब मैं थोड़ी सी रिसर्च तुम्हारी पढ़ रही थी तो आई अंडरस्टूड कि इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे तुमने बात की है और काफ़ी चीज़ें मुझे पता भी नहीं थी. सो मैं हम लोग हमेशा जो ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं वहीं से शुरू करते हैं बिकॉज लोगों को थोड़ी इंस्पायर करना होता है, लोगों को ट्रू स्टोरीज पता होनी चाहिए एंड स्ट्रगल्स पता होनी चाहिए और हैप्पी टाइम्स बैड टाइम्स सब कुछ पता होना चाहिए यू नो. और बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि इस फील्ड में अभी भी आना चाहती हैं. अभी भी मुझे कॉल्स आती हैं, अभी भी मुझे लोग तस्वीरें भेज रहे होते हैं कि हमें मॉडल बनना है और कैसे करना है, आप हमारी मदद करें. So let's talk about Mushk and your life. And let's start. You're very young, mashallah. So I was reading, about your birth. So let's start with where you were born. किधर पैदा हुई थी आप? So मैं कराची में पैदा हुई थी. ठीक है. और मैं कराची में एक बहुत ही छोटे नॉर्मल से घर में पैदा हुई थी. एंड मेरे अब्बू कराची में काम नहीं करते थे, मेरे अब्बू बाहर काम करते थे. एंड आई यूज़ टू लिव विथ माई चाचूज़ एंड माई दादी. एंड जिस तरह का हमारा घर का माहौल था, इट वॉज़ वेरी क्लोज निट क्योंकि जॉइंट फैमिली थी और सब साथ रहते थे. एंड इट वॉज़ अ वेरी लविंग हाउस होल्ड बट इट वॉज़ कंजर्वेटिव. सो दूर तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि कोई लड़की हमारे ख़ानदान में से इस इंडस्ट्री में जा सकती है. आई रिमेंबर जब मैं क्लास 5 में थी and I wanted to do my O&A levels. तो उस पर भी काफ़ी ऑपोजिशन थी. नो यू कांट डू एन योर O&A levels बिकॉज वो तो ठीक नहीं होता और तुम्हारा 1 साल भी ज़ाया हो जाएगा. छोड़ो यानी कि मैट्रिक कर लो. हाँ, मैट्रिक कर लो. एंड टू बी ऑनेस्ट, how many brothers, कितने हो तुम लोग? हम लोग 4 बहन भाई हैं और आई एम द ओनली सिस्टर. आई हैव 3 brothers. अच्छा, बड़े हैं छोटे? एक मुझसे 1 साल बड़ा है, एक 4.5 साल छोटा है और एक तकरीबन 7 साल छोटा है. So you're in the middle, second. I'm the middle child, second. yeah. Okay. So, which background do you come from? Are you Punjabi? Urdu speaking. Urdu speaking. Yeah. Okay. Both parents are Urdu speaking. Both parents are Urdu speaking. और वो partition पे आए थे यहाँ पे अब हमेशा से यहीं? नहीं. हमेशा से यहीं आए थे. Really? Yeah. So they were here from before 1947. So no, my grandfather from my अम्मी की side, he came from India, but because Urdu speaking है ना, that's yeah, why. Which area? yeah, Lucknow. Deoband. Yeah. I don't even know where that is. कहाँ है? I only know this because I know कि ये सवाल रिश्ता process में काफ़ी पूछे जाते हैं. Yeah. So people are very intense. मतलब वो काफ़ी पीछे जाते हैं जब आपके ख़ानदान में रिश्ते की बात होती है. Me and my brother both got married in the same year, so I know कि ये वाली history हमारी वापस आई थी. हाँ. So yeah. Deoband, okay. And so your parents are apparently they're not married anymore. Are they separated? No. So sorry, I mean if it's an uncomfortable question, but I got you said that your father lived abroad. Where was he living? So okay, surprisingly, I don't speak about this a lot. My father is a missing person. Oh. So yeah, I don't speak about this. My father used to I'm so sorry. No, it's okay. So my father used to work in Nigeria and he got kidnapped from his ship. He used to work for an American cargo shipping company. Merchant Navy, huh? Okay. Yeah. And he got kidnapped on the 22nd of February 2013. So this year actually completed 10 years of him being missing. And he was taken as hostage. उनको उनके शिप से उतार के पायरेट शिप पे बिठा लिया था. हाँ, बहुत होता है अफ्रीका में. सोमालियन तो बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स हैं.
Yeah, so actually it was Somalian pirates and this is back in 2013. मुझे याद है मैं अपने second semester में थी university के and we found out that his ship had been hijacked and जिस ship से उनको उतार के boat पे रखा था pirates की वो बीच समंदर में टूट गई थी and we know this because उनके साथ एक और पाकिस्तानी बंदा था उस boat पे और वो बच के वापस आ गया because उसको किसी और ने उठा लिया था while he was in the sea after the ship What broke a down. story. ये क्या कहानी है? So But did he see your father? Maybe did he spot him alive? he says that he spent 2 days with my father in the middle of the sea and then a storm came they and got he separated. drifted somewhere else और वो कहीं और चले गए थे और उनको फिर अगली सुबह किसी और ने उठा लिया but there hasn't been a body, there hasn't been communication, so he is a missing person. Surprisingly, yesterday my mother called me and told me कि उनका death certificate बन गया है because पाकिस्तान में you can't get paperwork done for missing people that easily. So did you? अंसार बर्नी बहुत काम करते हैं Yeah. मिसिंग Yeah. पीपल पे एंड लोगों को मिलाने में चाइल्ड लेबर पे भी वो काम करते हैं उनसे आई एम श्योर कि आप लोगों ने सब कुछ किया होगा. Yeah. इट्स इज अ वेरी ट्रॉमेटिक थिंग. Yeah. मुश्क ये तो मैंने कभी पता ही नहीं है किसी को भी नहीं पता ये. हाँ ये नहीं पता तुमने क्यों नहीं बताया? क्योंकि पता नहीं है ना. पता के अलावा आई डोंट वांट पीपल टू पिटी मी फ्रीहा. आई यू नो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत मेहनत की है टू कम to be where I am. I've come so far because I carry merit with me. मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे बोले oh अच्छा this girl needs a break because she's been through so much. I haven't been through a lot. I'm very privileged. Allah का शुक्र है. So this is not the defining moment of my life. It's just one But part of it. it's huge. When you कहते हैं कि जब you know लोगों की किसी की डेथ हो जाती है पेरेंट की किसी की भी उसमें क्लोजर होता है. उसमें क्लोजर बड़ा इम्पोर्टेंट होता है इंसान की ज़िंदगी में. और जो भी ट्रॉमाज से आप ज़िंदगी में गुजरते हो whether you are very young, obviously जब आप छोटे होते हो तो बहुत ज़्यादा आपको अफेक्ट करता है. और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है यू बिकम वाइजर विद थिंग्स. मगर जब क्लोजर नहीं मिलता तो वो जो सस्पेंस होता है ना उसके अंदर वो बहुत ट्रॉमेटिक होता है और उसको आप एक किस्म का दबा नहीं सकते क्योंकि वो एक ट्रॉमा है आपकी ज़िंदगी में जो चलता रहेगा. सो ये तो फिर और भी आपके लिए मुश्किल से आप गुजरे हो. सो वेयर वर यू ब्रॉट अप इन कराची? So in Karachi, Federal Bay Area Block 12 and जहाँ पे मेरी अम्मी अभी रहती हैं उससे एक गली आगे वो घर है जहाँ पे मैं पैदा हुई थी. अच्छा. So we've always stayed in Federal Bay Area. Okay. And it was a good neighborhood. I mean, मेरी साइकिल होती थी और मेरे भाई होते थे और हम लोग रोड पर होते थे और बारिश हो रही है and I mean it was a good neighborhood. I've had good times there, but I think काम की वजह से and because of commute issues I had to move to the other side of the bridge as people call it. But my childhood was good. Yeah, and मैं इस बात से भी खुश हूँ कि तुम ओन कर रही हो इस बात को बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं वो काफ़ी बिकॉज हमारी कुछ सोसाइटी में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं. जब आप एक सेल्फ मेड बंदा होता है इंसान वो आपको बहुत जज करते हैं कि आप कौन से स्कूल में जा रहे हो, आप अंग्रेज़ी बोलते हो या आप उर्दू बोलते हो या आपकी उर्दू भी ख़राब होती है तो भी आपको जज हर चीज़ पे जज करते हैं यहाँ पे. स्पेशली आपकी अंग्रेज़ी एक्सेंट पे बहुत ज़्यादा आपको जज किया जाता है. हालांकि आपने देखा होगा कि मिस यूनिवर्स भी हैं अभी तक. मेसी बिल्कुल जो फुटबॉलर है वो भी एक ट्रांसलेटर इस्तेमाल करता है. ये हमारा कॉलोनियल प्रॉब्लम है, ये एलिटिस्ट प्रॉब्लम है, ये क्लास प्रॉब्लम, ये सारा अंग्रेज़ों की वजह से हमारे कल्चर में आया है. सो इस चीज़ को ये बहुत ज़रूरी है कि इंसान जब सेल्फ मेड होता है जहाँ से भी आए इट डजंट मैटर वो आपकी जर्नी जो होती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है यू नो उसको. और फिर मैंने सो बेसिकली मैं तो तुम्हें कुछ सालों से जानती जब से मैंने साथ काम करना शुरू किया था एंड मुझे ये अभी तक याद है. आई मीन लेट्स गो बैक टू योर चाइल्डहुड बिकॉज ऑब्वियसली ये तुमने एक बहुत बड़ी बात बताती है. तो हाउ डिड यू आई मीन ऑब्वियसली इट्स एक अच्छी चीज़ है कि यू आर इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम राइट. चचा भी हैं, योर मदर इज़ देयर, योर ब्रदर्स आर देयर. तो उसमें एक सेफ स्पेस आ जाती है, सिक्योरिटी आ जाती है एंड प्यार भी होता है और दुख भी बांट सकता है इंसान अपने. लड़ाइयाँ भी होती हैं लेकिन ये कि इट्स नॉट ईजी बट इट्स ऑल्सो अ नाइस प्लेस टू बी.
तो बट योर मदर ऑब्वियसली 10 साल से वो भी कोप कर रही होंगी इस चीज़ के साथ, एंड देन ऑब्वियसली नाउ द इंफॉर्मेशन जो रिसर्च मुझे मिली है Yeah. वो कितनी गलत है, Yeah. कितनी गलत है कि मैंने तुम्हें ये सवाल किया और तुम इतनी अपसेट हो गई. और ये अच्छा है कि तुम यहाँ बैठ के ये बात कर रही हो, बिकॉज बहुत सारे लोग पाकिस्तान में मिसिंग persons is a big problem. Yeah, I know. And it's quite a traumatic thing to go through, and I'm really sorry कि कि ये हुआ है तुम्हारे साथ. But let's talk about childhood. तुमने कहा साइकिलें चलाते थे, obviously 4 बहन भाई तो खेलते हैं काफ़ी Yeah. साथ, तो चचा के भी कजन्स भी साथ रहते थे. So, क्योंकि मेरे अब्बू सबसे बड़े थे तो मुझ में और मेरे चाचू के बच्चों में काफ़ी ज़्यादा एज का फ़र्क है, बट क्योंकि इतना क्लोज सब पूरे मोहल्ले के सब लोग थे तो सब बच्चे अपनी एक दूसरे के घर पर हैं. सो माय चाइल्डहुड वो मतलब मेरे अपने कज़न से ज़्यादा मेरे मोहल्ले के दोस्तों के साथ गुजरा है. तो माय नानी शी यूज्ड टू लिव फेडरल बेरिया ब्लॉक 21 एंड दैट्स अ गेटेड कम्युनिटी. तो वहाँ पे हर गली का बंदा आया हुआ है एक ही गली के अंदर क्रिकेट खेलने, लड़के लड़कियाँ अंकल आंटी सब साथ खेल रहे होते थे. सो it was nice. I've always been very proud of where I've been brought up because I feel like मेरे इन्हीं चीज़ों की वजह से कुछ values हैं मेरी जो मेरे अंदर instill हुई हैं. You know? Confidence भी. Yeah, I'm sure. Yeah, absolutely. Confidence भी. मुझे याद है जब university का admission का time था, I think a lot of people were wondering if I would get accepted or not because उस time पे there was this rumor कि वो आपके application process के दौरान आपका address check करते हैं. But I think that was a rumor because हो ही गया at the end of the day admission. It's about your credibility and your qualifications and your mehnat and your interviews also matter a lot. So अब I'm just trying. अच्छा मैं ये हमेशा जो there's a movie also called Tall Girl. Yeah. I watched that movie and I mean there's obviously when you become 16 and you're tall and beautiful और आपको काम मिल रहा है मॉडलिंग का, मगर उससे पहले एक awkward period होता है when आप स्कूल में सबसे लंबे होते हो और लड़कों के बराबर उनसे भी लंबे, तो बहुत ज़्यादा आपको टीज किया जाता है या आपको लोग बच्चे बहुत ज़्यादा वो करते हैं. Did you go through that? Of course, even though both my younger brothers are taller than me, by the way. Okay. So I am one of the shorter people in my family. But मैं क्लास में सबसे पीछे, स्पोर्ट्स की लाइन में सबसे पीछे. एंड जब मैं खड़ी होती हूँ तो आई रिमेंबर इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड मॉडलिंग, ताबिश वुड इमीडिएटली पैट ऑन माई बैक एंड ही इज लाइक सीधी खड़ी हो. एंड आई वुडंट रियलाइज कि मैं इतनी कॉन्शियस हो गई थी ज़्यादा लंबी लगने की कि मैं यूँ चलती थी कंधे नीचे करके अपने. बट ऑब्वियसली दैट इज़ समथिंग आई एम वर्किंग ऑन. अभी भी मैं कोशिश करती हूँ कमर सीधी करके शोल्डर्स पीछे करके बैठूँ. But yeah, I was bullied a lot for my height. Yeah. Every single guy I ever had a crush on just happened to be shorter than me. So yeah. नहीं वो तो चलो वो तो हो सकता है, right? Yeah. But ये है कि obviously इंसान you want to be normal. You want to be beautiful, but you want to be normal and like fit in. Yeah. Fitting in की बात होती है ना, वरना फिर वही वाली बात है कि सब everybody starts questioning and doing things like that. So that's so your childhood was mashallah great. Yeah. You went to Mama Parsi school. I went to Mama Parsi, yes. Okay, which is a good school, very good school, yeah. And then after that मैंने पढ़ा है कि आपका interest theatre में भी था, debating में भी था. Yeah. So tell me a little bit about that. So Mama Parsi के जो मेरे 10 साल थे were very shy and quiet. I don't know why, but then I went through this transformation and then जब मैं college गई हूँ St. Joseph's, मैं बिल्कुल बदल गई. It was a 180-degree change. I was in the students' council. I was playing sports. मैं debates. I remember जब मेरी debate competition था and my mother has never known me to be a public speaker. तो मैंने मामा को बताया कि हाँ वो मेरी कल debate है and मैं जा रही हूँ. कॉलेज के साथ ही जाऊँगी, कॉलेज से वापस आ जाऊँगी. She says okay. And then the next day I come back home with a trophy. She thought कि शायद मैंने किसी से लेके किराए पे या मैंने खुद खरीद के अपने आप को गिफ्ट किया because I don't know, I think it was a very hidden transformation that I went through and बस वो लोगों से मिलना हुआ and I exposed myself to different kind of things and I realized I had potential. मैं बात कर सकती थी लोगों से. तो that is how my debating career started. And then I was in the students' council in college and in university in IB as well. And while I was in the students' council,
बात करने का शौक हो गया था. तो आई रिमेंबर 2016 में एक IBA के सीनियर ने अपनी प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट की थी स्टेज नोमैड के नाम से. एंड उसने मुझे बोला मुश्क लेट्स डू अ प्ले. मैंने कहा ओके लेट्स डू अ प्ले. एंड बाय दैट टाइम आई वाज आल्सो डूइंग अ फुल टाइम जॉब. आई वाज वर्किंग फॉर पैकेजेस लिमिटेड एज एन एरिया सेल्स मैनेजर. तो मेरी 9 to 5 जॉब अलग होती थी. अरे हाउ डिड यू मैनेज? व्हाट एज वाज दिस? सो आई वाज 21, 22. When did you start first working? सबसे पहली जॉब क्या थी? My first ever job was when I was 17. I was working for this marketing agency and I was doing a brand ambassador program for them at Expo. वहाँ पे कोई exhibition हो रहा था, कुछ हो रहा था for Habib University. अच्छा. And they wanted these girls to be brand ambassadors. हाँ, जैसे अभी हम लोग करते हैं हमारे events में brand ambassadors, BAs कहते हैं उनको, BAs. हाँ, BAs. हाँ. So मैंने वो स्टार्ट किया था when I was 17. फिर उसके तनख्वाह बाद कितनी थी? मुझे अब 5,000 मिलते हैं, उस वक्त कितने मिलते थे? अब 5,000 मिलते हैं per day. पर डे 5 से 10. अच्छा, so I used to get like 1,000 or 1,500 per day. अच्छा. And वो 10 दिन के होते थे, so that would be like 15,000-16,000. Good money, हाँ. Yeah, उस जमाने में 15,000 was a lot. बहुत ज़्यादा. और मैंने अब सुना है, ये भी मैंने पढ़ा था तुम्हारे बारे में कि तुम उससे अपने आप को भी सपोर्ट कर रही थी कॉलेज में, और भाइयों को भी. Yeah, so अभी कंट्रीब्यूशन 17 years की, ये बहुत ज़रूरी है एवरीबडी टू हियर दिस, बिकॉज बाहर के मुल्क में आम शाम होता है. मैं हमेशा कहती हूँ 13 साल की उम्र में बच्चे अखबारें अपनी साइकिलों पे ले जाके फेंकते हैं लोगों के घरों के बाहर और पैसे कमाने शुरू कर देते हैं. एंड समर्स के अंदर वो जॉब्स ले लेते हैं, लोगों के लॉन मो करते हैं. अब यहाँ पे तो किसी को कहो, किसी भी क्लास के बंदे को कहो के जाके करे तो वो कहेंगे मैं माली का काम नहीं करूँगा. आई मीन पीपल हैव दिस, इनके दिमाग में ये वाली बात नहीं है कि कॉलेज के बाद ही काम करना है, यानी कि ख़त्म करके. बट नो, यू वर डूइंग दिस एट 17. आई थिंक इट हैज़ ऑल्सो कम फुल सर्कल काफ़ी तरीक़ों से, बिकॉज आई रिमेंबर पैंटीन की कोई एक्टिविटी हो रही थी. एंड अभी रिसेंटली व्हेन आई डिड पैंटीन का कमर्शियल, आई वाज क्वाइट इमोशनल अबाउट इट, बिकॉज मैंने आज से 10 साल 11 साल पहले ये नहीं सोचा था कि मैं अगर ये किसी दुकान पे खड़े होके आगे इसको प्रमोट कर रही हूँ, आई कुड एक्चुअली बी द फेस ऑफ दिस कैंपेन आफ्टर 11 years. तो इट्स बिन वाइल्ड, मतलब मैंने नहीं सोचा था वाकई. एंड यू नो आई रिमेंबर जब लक्स का कोई नया वेरिएंट निकला था, एंड आई वाज वन ऑफ द BAs हु वाज स्टैंडिंग in Awari Towers at their office. Yes, डिस्काउंट मिलेगा. And ये वही लोग थे, मतलब, and these are all people who are part of the industry now. So I'm not ashamed of it. I mean, it's great. It is so emotional. I feel so much more value for the work I do, because मैं सोचती हूँ कि मुश्क कलीम तुम आवारी के उस कमरे में खड़ी हुई थी, and now look at you winning awards, the Lux Style Award that you were talking about, you know. तो हाँ, it's and it's nice. a young age. ये नहीं कि अभी नहीं, she's not 60 guys. Okay, she's got, if she writes a memoir now, there'll be another 2 memoirs coming out by the time she's 60. So I mean, ये बहुत important बात है, और ये मैं इसलिए समझती हूँ कि इस पॉडकास्ट पे important इसलिए है कि it inspires जो young लड़कियाँ हैं. You're lucky कि तुम्हें at least लड़ना नहीं पड़ा पेरेंट्स के साथ इन चीज़ों के लिए, एटलीस्ट BA, बिकॉज ऑब्वियसली हमेशा जब एक लड़की कमाना शुरू कर देती है और कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देती है तो सब कुछ सही हो जाता है. यू नो, मुझे भी पता है कि मुझे भी लड़ना पड़ा था उस ज़माने में टू डू वट एवर आई वॉज डूइंग. बट जब आप पैसे कमा के घर लेके आते हो ना, तो इकोनॉमिकली लड़कियों का स्टेबल होना और इस चीज़ के लिए लड़ना, काम करने के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है, अपने पैरों पे खड़े होना, बिकॉज इकोनॉमिक से ही मुल्क चलता है और घर चलता है. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. आई थिंक I've always spoken about, I remember मैंने कोई किसी इंटरव्यू में बोला था कि यू नो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो किसी ने उस पर कॉमेंट किया हुआ था, इन मॉडल्स को देखो सिर्फ पैसों के बारे में बात करती रहती हैं, इट्स जस्ट पैसा पैसा पैसा. और मैं सिर्फ सोच रही थी कि आई फील लाइक मैं इसके बारे में बात इसलिए करती हूँ ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि ये सिर्फ मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सब, हर क्लास, हर एज. पैसा इज नॉट अ बैड वर्ड गाइस, पैसा इज नॉट अ बैड वर्ड. पैसा इज इम्पोर्टेंट. इट इज, या, इट्स नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. ये नहीं कि आप अपने आप को बेच रहे हो पैसे के लिए, लेकिन टू अर्न मनी दिस डिग्निटी इनकम. क्या आप बेकारी बन के हमें जिंदा तो नहीं रहना ना, जैसा कि इस वक्त हाल है हमारे मुल्क का. क्वाइट फ्रैंकली दुनिया में हम बदनाम हुए हैं कि हम लोन्स लेते फिर रहे हैं सारी दुनिया से जाके हाथ फैला के.
तो हाथ फैलाना, इस तरह से मेहनत नहीं करना और पैसा नहीं कमाना इज़ रॉन्ग. जब नेशन ही काम नहीं करेगा, ये मेंटालिटी लोगों के दिमाग से जाती क्यों नहीं है? गलत तरीके से पैसे कमाना गलत है, लेकिन मेहनत से पैसे कमाना, जो बंदा झाड़ू भी देता है उसमें भी डिग्निटी है. बिल्कुल बिल्कुल. और आपको किसी भी काम से कभी वो नहीं फील करना चाहिए कि आप, एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू हैव दिस, तुम्हारी थॉट इतनी साफ है और इतनी क्लियर है इस चीज़ के ऊपर. अच्छा, सो अब ये हो गया, अब ये का भी काम कर लिया, ये सारा कुछ कर लिया, एंड सो इसमें कैसे, इस शोबे में फिर कैसे आ गई? बट एक मिनट, IBA उसके बाद you went to IBA? Yeah, so Education. after college, I went to IBA, and while I was in IBA, मैं कोई हर तरह की possible job कर रही थी. एक तो मैं वो BA की job कर रही थी, उसके साथ साथ I was working in Red Bull. So while I was working in Red Bull, हम लोग fashion weeks पे हम लोग backstage sample कर रहे थे Red Bull. And I was in my really tiny Red Bull की shirt and my skinny jeans, and मुझे किसी ने बोला आप modeling करेंगी. वो किसी वो बंदा था ताबिश, सबको पता है ये बात. और मैंने ताबिश को बोला नहीं, अभी तो मैं पढ़ रही हूँ. आई वाज इन माय सॉफ्टमोर ईयर. मैंने कहा अभी तो मैं पढ़ रही हूँ, अभी तो 2 साल हैं, एंड अभी मैं नहीं कर सकती. इवन तो मेरा दिल तो बहुत चाह रहा था, लेकिन मैं कर नहीं सकती थी उस वक्त, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने अभी कर ली ये मॉडलिंग तो मैं पढ़ाई पूरी नहीं कर पाऊंगी. बिकॉज इट्स हार्ड. मगर साथ साथ तुम BA की भी तो जॉब कर रही. ये भी कर रही थी, एंड हर इस सब सिचुएशन में सबसे बड़ा इक्वेशन ये था कि मैं रहती बहुत दूर थी. तो मैं ऑलरेडी आई वाज वर्किंग इन पैकेजेस. जिसका ऑफिस यहाँ क्लिफ्टन में था, तो मैं वहाँ से घर जाते जाते मुझे इतना टाइम लग जाता था. टेकिंग अप एन अदर जॉब वाज़न्ट पॉसिबल, एंड आई वाज आल्सो स्टडीइंग. बट हाउ आर यू स्टडीइंग अगर 9 to 5 जॉब थी? नो, सो 9 to 5 इस तरह थी कि वी जस्ट हैड 5 कोर्सेज, एंड हम लोग की क्लासेस हर रोज़ नहीं होती थी. सो आई वाज वन ऑफ दोज पीपल हु न्यू हाउ टू ड्राइव. तो मेरे साथ एक नॉन ड्राइवर लड़की होती थी. सो आई वुड ड्राइव, शी वुड सैम्पल, एंड वी वुड चूज डेज ऑल्टरनेटिवली. तो इस तरह होता था. बट एंड इट वाज नाइस. इट वाज अ फैंसी जॉब. आप एक मिनी कूपर चढ़ा रहे हैं, अच्छा सा आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है. तो मैंने कहा नहीं, अभी मैं नहीं कर सकती. देन फास्ट फॉरवर्ड IBA ख़त्म हो गया. मैंने पैकेजेस में जॉब कर रही थी. मुझे 2015 की ये बात है. उसके बाद 2017 में मुझे ताबिश ने वापस कॉल किया कि तुम अब मॉडलिंग करने के लिए तैयार हो, अब तो तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म हो गई है. मैंने कहा चलो, आई गिव इट अ ट्राई. एंड देन आई डिड FWhy विथ हिम. वो एक शो मैंने किया था सना सफीनाज का, एंड देन उसी दिन एक और शो था, सारा शाकरा का शो था. दे सेड वी आल्सो वांट यू. वेरी गुड. और वो 2 मैंने किए. एंड देन उसके बाद द नेक्स्ट थिंग आई नो, सनसिल्क की बॉटल कैंपेन हो रही थी. आई वाज recruited for that, and then it was just uphill. It hasn't stopped उसके बाद से. अल्लाह का शुक्र. Wow. So basically, so say 2015, 16, 17 is Yeah. when you started. अच्छा, so it's not been that long. अभी December of 17. हाँ, अभी तो 6 साल भी नहीं हुए, 5 साल ही हुए हैं. 5 साल. सवा 5 साल. That's a very quick climb. How tall are you, by the way? I'm 5'11" and a half. Wow. उधर में रिसर्च में 6 feet, वो तो आधा इंच तुम्हारा बढ़ा दिया सब. नहीं. You know? Wow. So now again, so ये models की range में you are the tallest girl. Yeah. Yeah. Okay. So you can't be paired with anybody. अच्छा, शुक्र है आजकल पेयरिंग भी नहीं होती ना. आजकल तो आपको सिंगल फाइल ही करवाते हैं. तो ज़्यादातर वो मॉडलिंग भी चेंज होती है. हमारे ज़माने में तो बहुत कुछ करना पड़ता. और सब पेयर्ड अप होते थे by heights. No way. Yes, of course. We used to walk together. We used to circle each other. We used to do all kinds of things. It was really different kind of era of modeling. But I'm sure that was also exciting. I mean, single file is just single file. It was about relationships. Yeah. Relationships उस वक्त आपकी bonding बहुत हो रही होती थी दूसरी लड़की के साथ या जिसके साथ भी आपको pair up किया जाता था. But it was, और फिर आपके कमरे भी वही होते थे. दोनों को एक कमरे में डाला. No way. I was always paired up with Athiya because we were the same height. और हमारी तो हाइट्स थी नहीं उस ज़माने में ना. 5 फुट 11.5 इंच की लड़की नहीं मिलती थी. 6 लड़कियां नहीं मिलती थी. सो उस टाइम से इस टाइम में बहुत फ़र्क आ गया है. एंड और तुम्हारे टाइम मॉडलिंग के स्टार्ट करने से और इस वक्त 2023 में भी बहुत फ़र्क आ गया है. सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ दिस क्विक चेंज हैज़ हैपेंड. एंड बट लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट. अब तुम्हारी थोड़े से करियर के बारे में बात करते हैं. बिकॉज सो IBA तुमने ख़त्म किया? Yeah, in 2016. MBA? No, I did my undergrad. Okay, and so then BBA. I was done with it in 2016. और मेरी अम्मी का बहुत दिल था कि मैं बाहर चली जाऊँ, मैं अपना मास्टर्स कर लूँ.
But then I was so done with it. I said, nahi mama, now I'm in modeling. Ab bas ho gayi hai meri. Now I really want to give this career a fair shot as well, Yeah, you know. yeah. And मजा आया ना, मजा तो आया ना मॉडलिंग में बहुत Enjoyed. बहुत मजा आया. I love it. I love it. I है do. ना? Yeah. You love it, right? I remember तुम्हारी बर्थडे थी. थोड़ी हिम्मत है वैसे लड़की. I remember तुम्हारी बर्थडे थी तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कैफे फ्लो पे. हाँ? Yeah. And you got out of the car. And you got out of the Kareem. I don't know if Kareem भी था उस ज़माने में कि नहीं, लेकिन you got out of a cab and you were wearing a white dress इतना. और मैंने सब कहा ये लड़की, और तुम बहुत दूर से आ रही थी. आई थिंक तुम उस वक्त उधर ही रहती, फेडरल भी एरिया में रहती. इसकी हिम्मत है, कैसे गाड़ी में घुस गई, इतनी लंबी लंबी टांगें, हाँ, इतने अच्छे स्कर्ट के अंदर. बट यू नो दिस वाज, तुमने एक वो मॉडल का रोल और हुलिया भी कर लिया था, you know, अपना लिया था, और लाइफस्टाइल भी. Yeah. आपके फॉर छोटी सी मॉडल Yeah. टू होस्ट अ लंच, बर्थडे लंच is Yeah. not easy. That's a lot of money to I spend also on. didn't think, to be fair, that people would show up. Can I be honest with you? क्योंकि मुझे सिर्फ 1 साल हुआ था और मेरी बिल्कुल bare minimum expectations थी, और मैंने सबको मैसेज तो कर दिया था कि oh yeah, expecting you guys. I really didn't think people would come. And then it was, हम लोग के पास टेबल like जगह कम पड़ गई थी. And I was really proud of myself. मैंने कहा Mushk Kaleem, you have some credibility here. तो Shaila Chatur was yeah, there, I remember. Umar Said was there. You guys came in. And it was a good time. It was a good time. Yeah. But yeah, I see this energy and this, it's energy होती है और एक इंसान की एक्साइटमेंट होती है जब इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं, you know, because हर बंदा नहीं करता. And obviously it's great कि आपको कोई लेके भी साथ चले, which Tabish has done. Yeah. तो बहुत important चीज़ है. So अच्छा, so all of this is happening. अब मॉडलिंग भी शुरू कर दी. अभी भी एक यंग एज जो होती है इंसान की, you know, जो जिसमें तुम आई हो, उसमें मैं नहीं समझती कि लोगों को बहुत सी चीज़ें बहुत देर से समझ आती हैं when they are in their 30s. Yeah. You know, सबसे 20s is where सारी mistakes हो रही होती हैं. Teenage तो बहुत ही confused होते हैं उस वक्त. Yeah. But so I mean, so all the things that have happened जो मैं पढ़ भी रही थी, I think those are important things to talk about. Yeah. So obviously तुम लंबी थी, Yeah. but weight conscious. Yeah. Let's talk about that. Color Yeah. consciousness. Let's talk Yeah. about that because ये चीज़ों के ऊपर तुमने बहुत बात की है. हाँ. So ये बहुत ज़रूरी बातें करने की. Yeah. You know? Let's talk about colorism. Okay. Okay. Yeah. Racism अभी भी पाकिस्तान में है, जो मर्जी Yeah. कर लें. हाँ जी, अब थोड़ा सा नमकीन वीटिश कलर भी होता है तो वो Yeah. रिश्तों में आ जाता है कि बिल्कुल. वीटिश भी एक्सेप्टेड है. हाँ, बिल्कुल. लेकिन पहले ज़माने में तो नहीं था ना, वो नहीं. गोरा कॉम्प्लेक्स बहुत. सो उसमें तुम्हें फील हुआ था कि तुम्हारे साथ भी ये हो रहा था? हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, बट आई थिंक वो पहले मेरे अपने अंदर बहुत ज़्यादा एक फीलिंग थी, क्योंकि मेरे अब्बू जो हैं, you know, if you look at my family, Priya, मेरे ख़ानदान में सब गोरे और सब कलर्ड आँखों वाले लोग हैं. कोई भी, Really? yeah. So my father has green eyes, my puppo, chachu, everybody Yeah. has blue eyes, and both my brothers were fairer than me. All my brothers were fairer than me. I was the tan, dark girl. So I think I was 9 or 10 जब मेरी दादी ने मुझे पहली दफ़ा कहा था कि you know, तुम फेयर एंड लवली लगा लो. Oh no. And but it didn't stop me. लेकिन जब मैं इंडस्ट्री में आई and I saw all these really beautiful, gory, clear skinned girls, तो मैं खुद तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स में आ ही गई थी. But then I started working in a different city, in a city that wants models to look gora. But even that didn't bother me. I think Lahore. Yeah, Let's just of say course. it, yeah. Lahore. Obviously, Punjab is all थोड़ी मोटी भी हो, थोड़ा सा फेट भी हो. हाँ, but मुझे तब भी इतना बुरा नहीं लगा था. What really ticked me off was कि जब मेरा मेकअप हो रहा था, the photographer came into the makeup room and उसने मेरा हाथ पकड़ा है, उसने आस्तीन ऊपर किया और उसने वो वाला फाउंडेशन पहले लगाया मेरे हाथ पे जो मेरे मुंह पे लगा हुआ था, which was my natural skin tone, and then he put in अब फाउंडेशन विच शायद जो मुझसे 7 या 8 टोन्स लाइट था, और मैं कहते हैं ये इनके हाथ पे लगाएं, इनके पाँव पे लगाएं, इनकी शक्ल पे लगाएं. आई गॉट रियली पिस्ड ऑफ. आई वांटेड टू लीव. एंड उस वक्त तो चलो, बिकॉज मुझे इतना टाइम भी नहीं हुआ था मॉडलिंग में, मैंने ये चीज़ कर ली. बट देन आई रियलाइज इट, आई डिडंट फील टू नाइस अबाउट इट. आई डिड वांट टू स्पीक अप अबाउट इट बिकॉज आई न्यू इफ दिस वाज गोइंग टू, इफ आई वाज गोइंग टू लेट दिस पास, ये बार बार होता रहेगा. लकीली फॉर मी उसके बाद आई हैव ऑलवेज
had a clientele जिन्होंने टैन लड़कियों को ही प्रेफर किया है अपने शूट्स में. दैट वाज जस्ट अ वन ऑफ थिंग, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो होता नहीं है. नबीला इज वेरी कॉन्शियस ऑफ दिस. Yeah. बहुत ज्यादा काम किया Yeah. मैंने ओके सबके साथ किया है. मगर आज सुबह भी मैं लड़के आई हूँ, अभी भी लड़ रही हूँ इस वक्त. मैं उसको कह रही हूँ कि भाई ये मेरा कलर है, ये आप मुझे ये टोन नहीं लगाएं. उसको मैंने 4 मरतबा चेंज करवाया कि भाई मुझे चिट्टा गोरा मत करो. आई डोंट वांट टू बी, I want to look like myself. वरना वो ग्रे लगना चाहिए. इंसान ग्रे लगता है. ग्रे. हाँ, ये अभी भी बहुत ज़्यादा होता है और ये हमारे जो कॉम्प्लेक्स है. So you spoke up about it. Freya, I spoke up about it mainly because this wasn't just for us और हमारी एज की लड़कियाँ. दिस इज ऑल्सो फॉर मेरी उन एज की वो लड़कियाँ who are becoming mothers now, who also have kids of their own. Like don't do this to your kids. Don't tell them that उनका अगर वो डार्क हैं तो उनका सेल्फ एस्टीम बिल्कुल शैटर हो जाना चाहिए. मतलब I grew up in a household जहाँ पे I wasn't very confident and शायद जब मैं कॉलेज में गई थी and I saw darker skin girls, I felt more comfortable and I had that लाइट बल्ब मोमेंट कि ओके यू नो इट्स जस्ट स्किन टोन. लेकिन अभी भी मुझे होता है अगर मैं इफ आई एम एट द बीच और या अगर मैं एवरी 6 months मी एंड माई हस्बैंड वी गो टू बलूचिस्तान, तो मैं जब वहाँ से जल के वापस आती हूँ, एवरीबडी सेज दिस टू मी, तुम काली हो गई हो मुश्क. एंड नाउ आई एम जस्ट लाइक ओके मे बी मुझे अभी भी कहती हैं धूप में मत. और हमारा विटामिन डी जो है हमारी खवातीन में, साउथ एशियन वुमेन में बहुत कम है, इसलिए कि हम धूप से डरते हैं. ठीक है, धूप से यू हैव टू बी प्रोटेक्ट योर स्किन क्योंकि आजकल रेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही धूप में ना जाएं या आप अपनी स्किन टोन से परेशान हो. ये आपको एहसास कमतरी कभी नहीं होना चाहिए जस्ट बिकॉज ये गोरा कॉम्प्लेक्स जो है गोरे छोड़ के गए हैं क्योंकि वो गोरे थे तो उन्होंने इंस्टिल किया कि तुम्हारी स्किन का और वी ऑल नो व्हाट हैपेंड विद इन अफ्रीका बिकॉज ऑफ दैट. सो इट्स अ वेरी वेरी बैड थिंग और इसमें अभी भी टाइम लगेगा इसको चेंज होने में. बट आई हैव गॉन थ्रू दिस. माई सिस्टर हैज़ ब्लू आइज, सो आई वेंट थ्रू इट एज वेल एंड आई फॉट इट all the time. But I also मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ तुम्हें because मेरे साथ भी ये हो रहा था. I had no confidence growing up. I always felt like the brown child compared to the gora sister and brother. You know, ये बहुत होता है. And the second thing that you talked about, you went through some health problems as well. And what was that? वो बताओ ना, वो मुझे बहुत ज़रूरी है और मैं चाहूंगी कि तुम उर्दू में बोलो ताकि ये ज़्यादातर खवातीन के पास, खवातीन नहीं मर्दों के पास भी मैसेज आए. बिल्कुल. हाँ, बताओ ये बात. आई थिंक जब मैंने मॉडलिंग, ये आई एम 28, तो ये 3-4 साल पुरानी बात है. अच्छा, इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है बट अभी तो 5 साल ही हुए हैं. ज़्यादा पुरानी नहीं है. तो मुझे मॉडलिंग करते हुए 1.5 साल हुआ था. एंड मुझे ऐसा लगता था कि मैं हर वक्त किसी भी साइज़ की हूँ, कुछ भी खा लूँ कुछ ना भी खाऊँ, आई ऑलवेज फेल्ट कि मेरा वज़न ज़्यादा है. एंड आई फील लाइक क्योंकि यू नो यू हियर दिस टर्म सैम्पल साइज़, इंसान को सैम्पल साइज़ होना चाहिए. एंड मुझे बस ऐसा लग रहा था कि इवन तो मैं बहुत कमज़ोर थी फ्रिया. आई वॉज 48 kgs. 48 kgs मैं 6 फुट की लड़की 48 kgs थी और मुझे उस वक्त भी यही लगता था कि मेरा वज़न ज़्यादा है बिकॉज आई वॉज वेरी मुझे आई नो व्हाट दैट टर्म इज. उसको कहते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिया. मुझे बस ऐसा लग रहा था कि माई बॉडी इज़ नॉट नाइस और आई वॉज टू फैट. और अभी जब मैं अपनी वो तस्वीरें जाके देखती हूँ मैं सोचती हूँ मुश्क अपनी हालत देखो, तुम्हारी हड्डियाँ निकली हुई हैं, तुम्हारी आंखें अंदर गई हुई हैं. लेकिन उस टाइम पे 4 साल पहले मुझे लगता था कि मैं मोटी हूँ. एंड ये इतना बुरा हो गया था कि आई टेल माई हस्बैंड अबाउट इट नाउ. जब व्हेन आई ओपनड अप अबाउट दिस सबसे पहले तो मैंने उनको ये बताया कि मैं शीशे में देखना मैंने छोड़ दिया था. आई वुड एंड मेरा डिप्रेशन इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं शीशे में देखने से डरती थी. आई वुड स्टॉप टेकिंग शावर्स. आई वुड स्टॉप. But that's not good. That's unhygienic. But that's also part of how bad this was. कि मैं depression में चली गई थी. Yeah. Part of it that you will. Yeah. Really? Okay, just so you couldn't look at yourself. Yeah, मुझे मतलब मैं नहीं देख सकती थी अपने आप को और मुझे I would stop putting effort. मतलब कपड़े बस हैं तो बस हैं बस. मतलब कभी अपने ख्याल नहीं रखा कि मुश्क यू नीड टू शावर, यू नीड टू चेंज. अगर आप कहीं जा रही हैं तो आपका हुलिया इस तरह का होना चाहिए. मतलब बिकॉज I felt like my body just wasn't good enough for me. तो बिस्तर से निकलना इतना मुश्किल हो गया था मेरे लिए. And I remember उस टाइम पे मेरी एक हाउसमेट होती थी and she picked up on this. So every time I would be in bed या मैं नहीं निकलती थी या मैं बस अपने कमरे में बंद रहती थी, she would knock at my door. वो मुझे कहती थी I think it's time to shower because
मेरा डिप्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मुझे अंदाज़ा नहीं होता था कि मैं 20-20 घंटे एक ही जगह में लेटती रहती थी एंड आई वुड ओनली गेट अप टू यूज़ द वॉशरूम टू पी बेसिकली. तो एंड ऑल्सो आई थिंक दिस हैज़ अ लॉट टू डू विद कि मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल भी गई थी फ्रिया. मैं एक 22-23 साल की लड़की, मैंने आई हैव ऑलवेज बिन इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल. मैं IBA में आके यूनिवर्सिटी में आके मैंने लड़कों को अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा उस तरह से मेरा इंटरेक्शन हुआ था. ये भी बहुत प्रॉब्लम है. एंड जब मैं मॉडलिंग में आई तो आई थिंक लड़का लड़की कम, इट वाज द फेम, द मनी, द वैलिडेशन कि ओ माय गॉड हु इज़ दिस गर्ल. बिकॉज मुझे याद है एक टाइम था जब मैं दिन में 3-3 4-4 शूट कर रही होती थी बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं होता था. माई कैलेंडर वॉज बुक्ड. एंड एक जब आप 22-23 साल के होते हैं और आपने बहुत ज़्यादा पैसे नहीं देखे होते हैं, अचानक से आपके अकाउंट में चेक के बाद चेक क्लियर हो रहा होता है, आप एक बहुत अलग हेड स्पेस में होते हैं. तो आई थिंक उस टाइम पे देयर वर सर्टेन एक्टिविटीज़ दैट आई डिड बिकॉज आई रिमेंबर आई वाज टेकिंग फैट बर्नर्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. और मुझे मेरे भाई ने पकड़ा था ये करते हुए, और मेरे भाई ने मुझे बोला तुम ये क्या खा रही हो, बिकॉज आई डोंट टेक मेडिकेशन फॉर एनी थिंग. और मैंने उसको बताया कि दीज आर फैट बर्नर्स एंड आई वॉन्ट टू लूज वेट. और उस वक्त मैं आपको वही बता रही हूँ, मेरा वेट 48 kgs था. बस फिर आई टुक थेरेपी, गॉट इनटू थेरेपी, changed my entire social circle, was in a bad relationship, got rid of that, and things worked out. So when we're talking about drugs, that's the drugs that you were doing, or was it other substance abuse? It was also obviously other substances as well, but mainly I was so focused कि बस मेरा weight कम हो, मेरा weight कम हो, मेरा weight कम हो. I was taking these fat burners जो मैंने किसी और एक्टर ही की स्टोरी पे देखे थे by the way. तो this girl, वो खैर I won't take names of course. डॉक्टर से तुमने नहीं पूछा? नहीं, मैंने किसी डॉक्टर से नहीं पूछा. मैंने उस एक्टर से पूछा कि ये क्या है, और उसने कहा ये फैट बर्नर्स हैं और मैं जिम जाने से पहले इस्तेमाल करती हूँ. मैंने कहा आई डोंट हैव टाइम फॉर जिम. तो उसने कहा नो बट तुम एक खा लेना. सो आई वुड टेक 2, एक सुबह एक रात, बिकॉज आई वुडंट गो टू द जिम. एंड उस लड़की ने शी स्टार्टेड ड्रॉपिंग वेट इन स्टोन्स. तो मुझे था कि चलो ये तो दिस इज गोइंग टू वर्क. एंड बट नो, that was bad. So the movie एक है ना फैशन बॉलीवुड फिल्म, उसमें भी यही होता है. I mean they show, I mean obviously there's, देखो हर प्रोफेशन के अंदर, whether you're in acting, whether you're in modeling, ये इसमें ज़्यादा नज़र आती हैं चीज़ें, you know, लोगों को, क्योंकि ग्लैमरस वर्ल्ड, तो लोग एक वो स्टेरियोटाइप बना देते हैं कि सारी मॉडल्स जो हैं वो यही करती हैं, वो ड्रग्स करती हैं, वो पार्टी करती हैं, वो you know तेज लड़कियां हैं, you know, हम हमारे ज़माने में फास्ट गर्ल कहते थे, फास्ट गर्ल, you know, it's a terrible term, it's a terrible, you know, term to use, it's derogatory. But you know it also comes with a cost, because I remember जब मैं शूट पर आती थी, मेरे मेकअप आर्टिस्ट मुझे इतनी गालियाँ देते थे क्योंकि वो मुझे कहते थे मुश्क whatever you're doing is not working, क्योंकि तुम्हारे डार्क सर्कल्स तुम्हारे गालों तक आ गए हैं. That is the term that they would use for me, कि मुश्क के डार्क सर्कल्स मुश्क के गालों तक आ गए. And अभी जब मैं अपना मेकअप करवा कर यहाँ आ रही थी, इट वाज द सेम टीम ऑफ मेकअप आर्टिस्ट, वो लाइक ओह वाओ मुश्क यू लुक सो नाइस, यू लुक ग्रेट, इतना मेकअप नहीं है, बहुत फ्रेश लग रही हो. अब इट्स इम्पोर्टेंट व्हाट यू पुट इनसाइड योर बॉडी इज वेरी इम्पोर्टेंट. No, gym is what they say, 20% or 30% maximum. 70% is what you eat. I'm also learning at this age. I'm learning from my children, because हमारे ज़माने में तो ये information ही नहीं थी उस वक्त, you know, जो कि अब है. How do you feel अब ये हमने सारी body shaming की बात की है, this is all about lack of information जो आपको नहीं दी जाती, because obviously हमारे पास ना कोई प्रॉपर ग्रूमिंग स्कूल्स, मॉडलिंग स्कूल्स नहीं हैं. जो लोग हैं जो सिर्फ आप यू सी यंग गर्ल्स जाते हैं, वो एंड आई नो दिस फॉर अ फैक्ट बिकॉज माई डॉटर वेंट थ्रू इट. 16 years of age she started modeling, and she would just hear people buzzing, you know, about, you know, girls also, because there's competition, and it's vanity, vanity at the end of the day. तो वो हर बंदा एक competition में लगा हुआ है. And she started smoking, and she started, you know, losing weight like you're saying. So I know exactly. And she left modeling. She hates it. She hated it because of this reason. But you're not supposed to hate. आपको इसको hate नहीं करना, आपको बस सही तरीके से काम करना है. और ये बहुत important बातें तुम कर रही हो इस वक्त, because ये लड़कियों तक पहुँचे हैं कि भाई आपको
सीखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा सही तरीके क्या है. So अब थोड़ा सा जो अच्छा हुआ है, I don't know how you feel about it, but दुनिया भी चेंज हो गई है. There is no longer you don't have to be tall, you don't have to be thin, you don't have to be size 0, -1. अब तो आपको diversity, inclusion, color, हर किस्म का बंदा, special needs, special abilities, disability, whatever. It's not even a disability anymore. So how do you feel about that coming in? Because ये देखो ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुआ, काफ़ी लोगों के साथ हुआ है, तो अब कल्चर ही चेंज हो गया है. So I शुरू में I was very resentful, I'll be very honest, क्योंकि शुरू में मैं सोचती थी कि मैंने अपना वज़न इतना कम किया है, how is this person who doesn't look like the standard model, इसको वो अपॉर्चुनिटी क्यों मिलनी चाहिए जो मुझे मिली है. मतलब शुरू में I was very resentful towards it. And जब मैंने एक दफ़ा कोई इंटरव्यू दिया तो किसी ने मुझसे पूछा मॉडल फेस और मॉडल साइज, तो मैंने बोला मॉडल साइज. एंड देन द एंटायर IB कम्युनिटी just came after me कि like मुश्क तुम एक पढ़ी लिखी इंसान हो, how can you say that. बट मैंने उनको फिर ये बात समझाई, मैंने कहा this isn't about how I feel, you need to understand कि जब फैशन शो हो रहा होगा ना, the industry requirement, the industry is never ever going to take a plus size woman to walk the ramp. It has never happened. There is no model. Do you remember the last time any designer took a plus size model for their ramp other than Generation? Chalo, I'll understand that Generation is an exception to this rule. But मुझे अभी तक याद है, चाहे वो bridals हो, चाहे formals हो, चाहे FPW, कोई सा भी show, they always want you to lose weight, and they always want you. It was an industry requirement. It is an industry requirement. So but it's no longer an industry requirement. Globally, it's not. No, it's not. But we are light years behind what the global standard is. I agree with you. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ओके हूँ या ना ओके हूँ, आई नो कि द डिसीजन मेकर्स इन द इंडस्ट्री इन पाकिस्तान आर नॉट ओके विद वुमेन हु डोंट लुक अ सर्टेन साइज. What is your message to them now? Now that globally, it is very important to be inclusive, and the younger generation, जैसे कि Amir Adnan, Huma Adnan's daughter, she's Parishit done a show, and with all sizes and all types of people, whether it's a transgender. I know that we had a show 3 years ago which is called Beyond Beautiful. The uska naam hi Beyond Beautiful tha. To be beautiful, you have to be beyond this. You know, because ये कब तक रहेगा? नहीं रहता. Right? नहीं रहता, absolutely नहीं रहता. And you know, हम लोग जिस fashion, like I feel like being fashion forward, सबसे बड़ा part उसका यही है कि हम सीखें. I feel like हमेशा सीखने की जगह होती है. तो अब लोग कर रहे हैं ये, मतलब अब मैं देखती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा डार्क स्किन लड़कियों को प्रेफर किया जा रहा है, और अब छोटी लड़कियों को, you know, there are girls who are 5 feet tall and they're still doing shoots, and that's great. So I feel like fashion has opened up its doors, but do I think this is going to translate on the ramp? No, I don't. But ramp तो हो ही नहीं रहा ना. अब तो नहीं हो रहा, हाँ. Okay, so let's talk about that also. So अभी ठीक है, I think you are right. 100% कि अभी भी हमारी industry उस तरफ move नहीं की है. You know, Generation is a beyond. Again, Generation got the Beyond Beautiful award for that, because उसने एक she picked up a woman who was 60, 70, and put her into the shoot. Wow. She showed the two color skin girls in the same shoot. So Khatija is kind of moved from that. And I think some young designers, you will see that they will start, but influencers. So now it's no longer, I think, if I can say this, she's the last supermodel. Mushk Kaleem is probably the last supermodel we have, because it is no longer about, it's probably the super influencers. I'm going to use this word for the first time. The super influencers come into the game. And who is that influencer? It could be anyone. Could be a TikTok person. It could be, but mostly in fashion, what we're noticing, it's girls who are very good at social media and very good at styling themselves and learning the tricks, but they're also educated. I'm noticing this. So TikTok goes into a different direction, because TikTok आपको अभी भी fashion में इतना नहीं है. It's more Instagram, and because it's pictorial and it's visual. So how do you feel? And you've become an influencer, because I know that with all the campaigns during COVID, after COVID, virtual fashion weeks also, hybrid, you also did my virtual Lux Style Award. Yes, I did. Hosting, I remember that.
and oh my God, and Mushk was so tall, and everybody else was here, and I had a fight with the director कि इसको बाकी गेस्ट को स्टूल क्यों नहीं पकड़ाया तुम लोगों ने, क्योंकि वो इतनी लंबी लग रही थी. But anyway, coming back to this, तो अब ये influencer fashion जो है, okay, इसकी बात करते हैं. And I think for you to transition into it hasn't been hard, right? No, not really. हाँ. You're still अभी shoots कर रही हो. I mean, I don't know, अभी तुमने थोड़ी break ली हुई है, लेकिन कर रही थी throughout COVID and throughout. So COVID में तो I took a clean break. Okay. But COVID के बाद से I've been doing a lot of shoots, but now I'm मतलब मेरे अपने अब rules हैं, क्योंकि बीच में I don't know इस इंडस्ट्री को क्या हो गया था, सब लेट आ रहे थे, सबके अपने अपने इश्यूज थे, एंड मैं उस सब में फंसना शुरू हो गई थी बहुत ज़्यादा. तो मेरे लिए आसानी यही है कि मैं अब सोलो शूट्स करूँ. तो मैं अब करती जब शूट्स हूँ तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ कौन कौन है शूट पे. अगर वो मुझे बोलेंगे कि 7 मॉडल्स हैं तो मैं मना कर देती हूँ. तो मैं बोलती हूँ नहीं, आई एम गोइंग टू डू अ सोलो शूट. इफ़ यू हैव समथिंग जस्ट फॉर मी, कॉल मी, आई विल बी रेडी. तो अब and I feel like after 5 years you can set the rules for yourself a little bit, Priya. Yeah. और फिर अगर तुम्हारे अपनी influencer चल रही है इन्फ्लुएंसर का काम, बिकॉज आप एक इंटेलिजेंट लड़की हो, आप IBA की ग्रेजुएट हो, सेल्फ मेड हो, एंड यू कैन गो इन टू अ डिफरेंट डायरेक्शन, एंड आपने डायरेक्शन दूसरी पकड़ी भी है, बिकॉज यू स्टार्टेड दिस कैंडल्स. Am I right? तुम्हारे नाम का मतलब ही फ्रेग्रेंस है. Yeah. So you started and how did that happen? ये कैसे entrepreneurship कैसे start हुई? So this friend of mine, she was smoking in my apartment. Oh, that's not and right. not just smoking something or the other. And all of a sudden my mother decided to come. And मैंने बोला oh my God, and उस वक्त मुझे था कि oh my God, I need to make sure that my apartment doesn't smell of weed basically. और पूरा तो मैंने, मेरी दोस्त का नाम है, तो मैंने कैंडल्स जलाई पूरा अपार्टमेंट में, एंड देन वाइल लाइक फिर अम्मी खाना लेकर आ रही थी तो मैंने खाना लिया, एंड देन शी लेफ्ट. और जब वो खाना लेके चली गई, आई जस्ट हैड अ लाइट बल्ब मोमेंट, बिकॉज मुझे इनिशियली परफ्यूम्स करने थे. अच्छा, बिकॉज बट कोविड में हर बंदे ने अपना परफ्यूम निकाला है, हर ब्रांड ने अपना परफ्यूम निकाला, एंड आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट. तो मैंने बख्तावर को बोला, मैंने कहा आई थिंक आई शुड गेट इनटू कैंडल्स. And then when we decided to do candles, I wanted to do something that was जो Pakistani हो, मतलब it speaks of Pakistan, and a lot of people don't know कि Pakistan में you have really good onyx and marble mines. तो फिर I tried pouring candles. मैंने 3-4 experiments किए, and we ended up pouring candles in marble jars. तो अब वो इतनी बड़े बड़े मार्बल के जार्स हैं, एंड उसके अंदर हम कैंडल्स पोर करते हैं, एंड आई थॉट इट वुडंट वर्क, बट सरप्राइजिंगली इट्स बीन वेरी नाइस. That's odd. I've never heard of this. Really? मैंने समझा कि मुझे नहीं, अच्छा मेरे पास तो है ही नहीं मेरे ख्याल में, पहली बात है. We must try and get a mushk candle. But so you actually, so that's, doesn't that increase cost? नहीं बढ़ जाती इसकी? बढ़ जाती है, but it is very luxe. I mean, it is beautiful. It is a luxury. Yeah, it is not a product for the masses. Like I wanted to create a niche with this product, and it is for a specific kind of market. So it is a giftable item. So abhi we just did an exhibition in Dubai. We were almost sold out there. Very nice. So yeah, so it's been doing really well actually. And इसके बाद और भी अपने fragrance भी बनाओगी अपन? Fragrance बनाऊंगी, लेकिन I feel like I just don't want to be lost in this whole saturation of fragrances. मुझे कुछ ऐसा करना है जो नहीं किया हुआ लोगों ने. Okay. You know, I've always been that person who does not want to go with the flow. So अच्छा, did you live on your own also for a while? Yeah. मैं वो कुत्तों की तस्वीरें देखती थी तुम्हारे साथ सारी. Do you still have those dogs? Yeah, I still have those dogs. I feel like they came with the jahez. Like there was no jahez at the end of the day. मैंने नादिर को बोला, मैंने कहा these dogs are going to come with me. So 3 dogs हैं, and I was living alone, and then COVID hit. और मुझे लग रहा था कि शायद मुझे उस वक्त कंपेनियनशिप की ज़रूरत थी, तो मैंने एक के बाद एक I ended up getting 3 dogs in 1 year. But best decision ever. You're a dog person. I am a dog person. Yes. That's nice. So okay, let's talk about तुमने कहा था कि मैं बचपन में मेरे पास crushes होते थे. Who was your first crush? My first crush, oh my God, you guys, उसको कोई भी नहीं जानता. There was a show called Boston Legal.
I know the song. I know Boston. You know Boston I Legal, love all right? legal shows. Do you know and- James Spader, Yes, who of played course. He's in Alan Blacklist. Shore? Yeah, in Blacklist. Yes, That yeah. was my crush growing up because I grew up watching Boston Legal, and I know it sounds so silly because he's old and he's fat, but just men like him who speak well, who have a certain charisma, Yeah. those are the kind of men that I'm attracted to. Even as a kid, I just knew that if I would ever be a lawyer, it would be because of this James guy, Spader, James Spader. And maybe इसीलिए तुम्हारे में वो debating skills. I mean, you never think about these things, huh? Debating skills and speaking skills, because that comes from there. Yeah. You know, being in a student council. Yeah. Those are things that come from इसी तरह होते हैं ना. अभी तुम Yeah. कितना अच्छा बोलती हो. सब नहीं अच्छा बोल सकते. Interview में भी लोग नहीं बोल सकते, you know. So coming from the shy girl to somebody who became a debater and then going into this. So James Spader. And then you said you had a few relationships and then you met your husband. Yeah. Yeah. The one, is he the love of your life now? Is he the love of my Obviously. life? Yes, Yeah. absolutely. He is the love of my life, because the real question is if I am the love of his life, because मुझे ऐसा लगता है I'm a very difficult person to be around. But no, I've been married for a year and a half. We were dating for 2.5 years, and it's been good. It's been Yeah? really good. But if you would ask me, like, आज से 4-5 साल पहले, do I see myself marrying somebody much older, somebody from a completely different background, I probably would have said no. So how did you meet? So we met through friends. Okay. So I was, while I was working for packages, this customer of mine had invited me to a rave at his house. Okay. And I decided, and I was already at a fashion industry ki party, so I decided to go to that rave. And my brother took me. I was like, Saqib, mera bhai ka naam hai Saqib. मैंने कहा, Saqib, मुझे drop करो. I need to go to this rave. And he's like, okay, sure, I'll drop you. And he was going through the end of his relationship. I was going through the end of my relationship, and I feel like, you know, misery needs company wali baat hai ke, you know, I think that was the common ground for us, that the both of us were moving out of certain relationships, and we found common ground to talk about. Initially, I think the both of us felt like we were rebounding off of each other, Yeah. but we gave it a fair shot, अभी because 4 साल हो गए हैं कि 1.5 साल शादी को 2.5 साल, तो that's 4 years. वो ही ना, right? और मुझे ऐसा लगता है कि इस when you're in your late 20s, I feel like everybody wants to settle down. तो कोई भी, मतलब at least me, I wasn't thinking that I want to hook up or I want to continue this as a fling. I really wanted to see to give this relationship a fair chance. Yeah. And it we started dating, and then COVID hit. So I think during COVID we were just automatically spending a lot of time together, because it was just him and it was just me. So Safe. Yeah, so we were safe and we weren't going out, and bas phir one thing led to another, and we ended up getting married. Yeah. Okay. Yeah. Great. And okay, and so it's been a year and a half. A year and a It's half. been like solid. So you know when they obviously there are always rumors, Yeah. Mushk, and that can be very hurtful. Yeah. And especially with beautiful young girls, models. I've gone through it, you know, and sometimes and it really hurts, especially when it's lies. Yeah. And when they're throwing things at you. I'm saying this Yeah. from personal experience, Yeah. because obviously इतनी जेलसियाँ होती हैं और इतना Yeah. वो होता है कि आपको सच का कभी सामने आता ही नहीं है कि भाई Yeah. एक्चुअल ट्रूथ क्या है. So I mean you've already mentioned Yeah. that कि he was at the end of a relationship, Yeah. and you were also, and obviously when that relationship is also very public and Yeah. and famous, Yeah. so then people start judging you, and especially Yeah. models को तो बहुत judge करते हैं. You know, I know Sadaf's gone through it, Sadaf Yeah. Kamal's gone through it, you know, and then they had to go and talk. So how did you deal with that? To be honest, I have not had any experience with anybody close to me going through a divorce. I'll be very honest with you. मुझे ऐसा लगता था it's just like how you see it on TV. It's like, you know, you say, okay, ख़त्म हो गया relationship, ख़त्म हो गया. I didn't realize that the paperwork takes more than a year and a half here in Pakistan. So I think a lot of the gossip that was happening was also happening because people were waiting for that paperwork to come in. Ke, oh, they're separated, but are they legally divorced? Like, has that paperwork gone through? So I think a lot of people were like, oh, she could have waited. I mean, if this guy is moving towards the end of a relationship, she should have waited for the paperwork. Little do people know, and obviously because I'm married to the man now, तो मैं ये बात बोल सकती हूँ कि getting divorced in Pakistan is really hard. It's not easy. I mean, and it was something that was dragged out for more than a year and a half. I mean,
at one point in time when we were looking to travel, or when I was introducing him to my friends, or he was introducing me to his friends, the gossip got to me, and I was like, listen, are you sure this is over? Because मुझे पता था लोग ये बात बोल रहे थे. And at the end of the day, to your family, you know, it comes to your family, then there's always that whole thing. It becomes very difficult to handle. And also for me personally, as I said, my mother was very conservative. The idea of me being with somebody who's already been in a marriage, मेरी अम्मी को बिल्कुल नहीं समझ में आई थी ये बात initially. Needless to say that Nadir and my mom are really, really good now, and they have this amazing relationship. But शुरू में, of course, because look, a parent is always going to be concerned. Yeah. कि भाई ये लड़का ठीक है कि नहीं अभी, you know, but ये relationships कभी-कभी नहीं काम करती ना, marriages नहीं काम करती, और एक difference होता है separation में और divorce में. लोगों को ये भी नहीं समझ आती. जब separation का मतलब है अलग हो गए, और बाहर के मुल्क में ये बहुत common है कि आप अलग हो जाते हो और divorce में time लगता है, तो उसको separation time कहते हैं. Okay. But I come from a family where literally everybody's just been married. तो मुझे and you know, as I said to you, मेरा exposure शायद जितना भी हुआ है ज़िंदगी में modeling में आके हुआ है, उससे पहले मेरा कोई exposure था भी नहीं. I really didn't know how these things worked. I don't know how these people who have more influence than me, who have more connections than me, मुझे नहीं पता था ये लोग किस तरह काम करते हैं. मैंने ये चीज़ें सीखी हैं. And to be very honest, I don't do a lot of interviews, तो मुझे वो correct करने का चीज़ में मौका भी नहीं मिला, so it's a good thing I'm here. That's it. I was, you know, because हम लोग यहाँ पे we don't like gossip, we like the truth. Yeah. So हमेशा पूछते हैं, question तो करना पड़ता है हर चीज़ को, लेकिन ये है कि it's a platform where you can come and speak your mind and say whatever it is, you know, which is important to get it out also, because it's important if you're a public figure. It's nobody's business, लेकिन फिर भी everybody makes it their business, and then at some point वो जो negative energy है वो आपको affect कर रही होती है. And you know, I don't want to be scared of being vulnerable, Freya. Like I think you know, मेरा जो पूरा brand image है, that's very, उसका जो core focus है ना, that's relatability. I want कि मेरी जो audience है वो मुझसे relate करे कि, you know, ये कितनी भी बड़ी model हो, ये एक लड़की, एक आम से घराने की लड़की who still lives a very normal life. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब when I speak my truth, शायद कोई और बंदा होगा कहीं ना कहीं जो बोलेगा यार, you know what, मैं मुश्क से relate कर सकता हूँ regarding body dysmorphia, या regarding her going through, you know, a very tough time trying to fit in, trying to find her space. Trying to find her father. Trying to find her father. I mean, come on. That's such a big deal. I mean, तुमने इतनी सी चीज़ें बताई हैं, depression and all of that. You also don't, maybe वो जो तुम्हारा जो ना खाना, or it all comes from everything in your life. It's not just कि modeling की वजह से हुआ या fit in होने की वजह से हुआ या confusion. It's all there. The trauma is all there, you know. And ये भी बहुत important चीज़ है, ये जो closure ना मिलना. I mean, getting the death certificate finally for your mom also. Because it's not just कि तुम अपना trauma bear कर रही हो, but you're also bearing the trauma of your family, your mom, your brothers rather. So I think ये बहुत important बातें हैं करने की. Is there anything else? What's next for Mushk Kaleem? So there are a few things in the pipeline. Okay. I might try my luck at acting. I think you should, right? Yeah. मैं आज ही बल्कि सोची थी, बल्कि आज नहीं कल रात को ये बात सोची थी, because I mean obviously as a model I haven't done a lot of acting, but I've done a little bit, and I'm doing a series now, and because the Vaniza thing was coming up. Vaniza also ने इसने ज़्यादा नहीं किया है काम, but जो भी उसने किया है अभी जो ड्रामा चल रहा है जिसमें निकाहनामा की बात कितनी बड़ी important बात है, and it's so nice for me to see कि एक model जो है उसकी ज़िंदगी जो है वो obviously this है कि modeling की life कम होती है, model की life career कम होता है, which we've seen over the years, you know, and but because models have become entrepreneurs, they've done so many things. I mean, you see Heidi Klum running a Project Runway, you know, and if you have the ability and the ambition, then you can take things forward. I think I'm one of those examples that you can take your life
you know, it is a short life, and then you take it to in a different direction and give back to society. Yeah. So I would like to see, definitely like to see you there and paired up with the right maybe guy or the right role, you know, and definitely would love to see more of that, and maybe we can help you with a little gift, yeah, which is coming from, this is a lovely brand called Lurella. Yes, I Yeah? know all about Lurella. You do? Yes, Okay. I do. Thank you so much. Yeah. Thank you, So Priya. a little bit of makeup for you. I love this brand. It's my daughter-in-law's brand. I know. I'm Yeah. all about supporting local businesses, by the way. Yeah, So I have seen this brand, and I know a lot of my makeup artists who also use this brand as well. So Very nice. Thank you for being here. Thank you. If for there's having any me. other thing you want to send out message to girls and boys, this is the time to do it. We can have you back in a few years again, but let's do that now. I think the only message that I've said multiple times to people is modeling is it's fun, but it is like any other job. Do not take it for granted. I mean, I treat this like I would treat any 9 to 5 job, and I've been in a 9 to 5 job. So yeah, make us proud. Pakistan's got some really nice talent. I feel like if we can make it to Milan, we can make it to anywhere else Yeah, in we the never world. talked about Milan. We never talked about your awards. देखो अभी Zurain वहाँ बैठा हुआ है मुझे बता ही नहीं रहा. अच्छा, let's talk about that. Let's fit that in, huh? Because it's important. I think part of your career. It is very 2017. You started modeling. 2019 you got nominated for the best emerging talent. I still remember. तुमने क्या पहना हुआ था? Maroon, magenta, Yeah. and you're wearing these beautiful earrings जो मैंने बाकी जाके उस तुम्हारे कानों में देखे थे, और फिर मैंने जाके I think हीरा जवेरी को हीरा जवेरी, order किए थे because they were beautiful, simple but gorgeous, and you won that. How did Yeah. that feel when you got that? I mean, एक debating की trophy तो तुम ले आई थी, modeling की भी trophy मिल गई. इतने बड़े platform पे. मुझे you know this is what I was telling you, like when I was standing on stage मुझे वो छोटी मुश्क याद आ रही थी जो आवारी टावर्स में खड़ी होके इसी लक्स की कोई प्रमोशन कर रही थी, and now here I was getting the award. मैंने ये award टीवी पे देखे हैं, मतलब तो मेरे लिए उसकी इमोशनल और सेंटिमेंटल वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, बिकॉज शायद मुझे कदर भी इसलिए थी बिकॉज I've seen myself on the other side of this, you know. I was somebody who was on the outside looking in, and now I'm somebody who's on the inside getting this award. So That means कि all those girls who are out there who are brand ambassadors अगर आप हैं या आप ushering भी करते हो, because बहुत सारी confident लड़कियों को schools and colleges से बुलाया जाता है, तो this is a step towards a bigger goal, and you can go to the other side, because it's just about अपने दिमाग जो है ना उसको, मगर जो बड़े important lessons हैं वो बहुत ज़रूरी हैं कि अपनी body का ख्याल रखना है, अच्छी एडवाइस लेनी है लोगों से, कॉन्फिडेंस रखना है, सच बोलना है, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक लाइफ फॉरवर्ड. एंड इसके अलावा ऑल्सो देन आफ्टर दैट यू ऑल्सो वन twice in a row, then you won model of the year, right? Okay, so ये भी बहुत बड़ी बात है. So this is excellent. And then you went to Milan. How was that your पहली ट्रिप थी तुम्हारी बाहर के मुल्क में या नहीं? Yes, वो मेरी first I know a lot of people don't believe me. I started traveling internationally when I came into the modeling industry. Okay. So the first time I traveled was for Milan Fashion Week, and I remember मैं इतना panic कर रही थी कि मुझे ये नहीं पता था कि आप एक एयरपोर्ट से उतर के ट्रांजिट करके दूसरे एयरपोर्ट पे कैसे जाते हैं, because अकेली जा रही थी? मैं पहले गई थी, फिर मेरे साथ जाहिर और शहजाद भी थे, and then the second model came in the next day. अच्छा, okay. तो जब मैं पहुंची थी, so to be honest, it was very, 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 it was one of the best things I've ever done in my life. The kind of adrenaline I had when I walked Milan Fashion Week का ramp, मुझे वो वाली feeling अभी तक नहीं आई है, because और वो हाइट भी थी तुम्हारी, ये नहीं कि तुम इतनी सी थी और बाकी सब इतने लंबे होते हैं, and I was also opening the show, तो मुझे याद है वो डिज़ाइनर मेरे पास आई थी और उसने कहा था कि I want you to open my show, and I said okay. एंड उसने पाकिस्तान की मॉडल्स को इसलिए लिया था बिकॉज शी वॉज लिविंग इन पाकिस्तान फॉर दिस वेरी कलेक्शन. वो पाकिस्तान में रुकी हुई थी, एंड जब उसका शो स्टार्ट हुआ था तो हमारा कौमी तराना चलना शुरू हो गया, एंड द इंटायर ऑडियंस वॉज स्टैंडिंग अप, एंड मैं सब क्योंकि ओपन कर रही थी शो में, सबसे आगे खड़ी हुई थी, एंड आई रिमेंबर जस्ट क्राइंग, क्योंकि you know, it is my country, this is the national anthem I've grown up loving and singing, and
जब उन्होंने वो किया और फिर मैंने जल्दी जल्दी आंसू साफ किया, said no Mush, you have to do a walk. And then I did the walk, and I think that was the prime of my career, to be honest. I feel like I'm still living my prime now, but that moment was, it was something. But there are always moments. Yeah. वो होते हैं. उसके बाद तो तुमने बहुत शूट किया होगा. अफ्रीका में भी गया होगा, थाईलैंड तो गई होगी. हाँ. अभी वापस आई थाईलैंड से. So that's because you're doing all these launch shoots वगैरह, वो तो सारे चलते रहते हैं पूरे में. That's great. I know कि हम वापस आए हैं थोड़ा सा, but it was important कि हम ये जो important moments होते हैं, मुझे पता है कि तुम क्या कह रही हो, because वो emotional, बहुत इंसान emotional हो जाता है जब national anthem आता है किसी और मुल्क में. वो बहुत बड़ा moment होता है. I know, and you know, वो हम लोगों को रियलाइज़ नहीं होता कि हम लोग वाकई अपने कल्चर की कदर नहीं करते, और हमारे मुल्क के बाहर जो लोग हैं वो हम लोगों के मुल्क के अंदर पोटेंशियल देख के वो लोग यहाँ पर रहना शुरू हुए हैं. मतलब शी सॉ कि पाकिस्तान में एक गांव के अंदर ऐसी औरतें हैं जो इतना अच्छा डिज़ाइन बना सकती हैं कि उनको हम मिलान फैशन वीक पे शोकेस कर सकते हैं. सो मतलब पाकिस्तान में है टैलेंट, बस उसको यूज़ करना है हमें सही तरीके से. एंड स्पेशली women मैं हमेशा कहती रहती हूँ, प्लीज़ एजुकेट करो अपनी लड़कियों को, एजुकेट करो, बढ़ाओ, इकोनॉमी बढ़ाओ. Okay, great. Thank you again, Mushk. I know we came back, we sidetracked a little bit, came back, but thank you for being here. Thank you for having me. And thank you for giving your truth, and I hope que I wish you the best. Thank you. मैंने कहा ना अभी तुम्हारे maybe another 5 years we'll have you back again because there'll be another Mushk we'll be meeting. Yeah. I hope. Thank you so much. Thank you. I had a great time. Me too. All righty. Thank you so much, guys. See you for the next podcast.